Q4 describe the parameters and impacts of the global wage report 2022-23। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मानदंडों एवं प्रभावों का विवेचन कीजिए। Description of the parameters and impacts of the Global Wage Report 2022-23 Introduction. The Global Wage Report 2022-23 published by the International Labour Organization ILO provides a comprehensive analysis of global wage trends, the impact of inflation and the challenges faced by workers across the world. It highlights disparities in wages between different countries and sectors, offering insights into income inequality and labour market conditions. This report analyzes several critical parameters to understand global wage dynamics. Parameters of the Global Wage Report 2022-23. Wage growth trends. The report focuses on the global wage growth trends during the period of 2022-23. It examines the factors influencing wage growth such as inflation, labor market recovery post-COVID-19 and government policies. In many countries, wage growth has been slower than inflation, leading to a decrease in real wages for workers. The report categorizes wage growth data by regions, income groups and gender. Though, impact of inflation, a key parameter of the 2022-23 report is the relationship between wages and inflation. Rising inflation, particularly post-pandemic, has had a significant impact on the real wage growth of workers worldwide. The report underscores how inflation has outpaced wage growth, eroding workers' purchasing power, especially in low-income and developing countries. Theme: Sectoral wage disparities. The report highlights significant differences in wage growth between various sectors such as agriculture, manufacturing, and services. It observes that while high-skilled jobs in the tech and financial sectors have seen better wage growth, low-skill and informal sector jobs have faced stagnation or decline in wages. Chart: Regional wage inequality. The report examines regional disparities in wages, focusing on differences between high-income, middle-income, and low-income countries. It reveals that wage inequality has widened between developed and developing economies, with workers in developing countries facing significant wage stagnation or reductions. Patch: Gender wage gap. One of the key parameters analyzed is the gender wage gap. The report provides insights into how women continue to earn less than men globally, with women facing more challenges in wage growth, particularly in developing countries and low-wage sectors. The report underscores the need for stronger policies to reduce this gap and promote gender equality in the workforce. Chair: Minimum wage policies. The report also examines the impact of minimum wage policies around the world, looking at countries that have raised or implemented minimum wage laws. It finds that minimum wage increases have helped reduce income inequality in some regions, although the effects are still limited in many low-income countries. SAR: Impact of the COVID-19 pandemic. The report assesses how the COVID-19 pandemic has reshaped global wage structures. The pandemic caused a significant shift in labor markets, with job losses in many sectors and a shift towards remote work. The report looks at how different economies recovered or failed to recover and how this affected wages. Impacts of the Global Wage Report 2022-23. Increased awareness of wage inequality. The Global Wage Report has highlighted the growing wage inequality between different regions, sectors and demographics. This has led to increased awareness among policymakers and organizations about the need to address wage disparities through better labor policies, improved minimum wage laws, and promoting inclusive growth. Though, policy recommendations for governments. The report provides several policy recommendations, such as improving wage growth through collective bargaining, strengthening labor rights, and introducing social protection measures to safeguard low-income workers. These recommendations aim to mitigate the effects of inflation and the rising cost of living on workers' wages. Theme: Focus on gender equality in wages. The ongoing gender wage gap highlighted in the report has pushed for stronger gender equality measures. Governments and businesses are now under increased pressure to implement policies that close the gender wage gap, provide equal pay for equal work, and address discrimination in the workplace. Chart: Increased pressure for wage reforms. In several countries, the report has sparked debates about the adequacy of minimum wages. There is growing pressure for wage reforms in countries where the minimum wage is insufficient to cover the basic living expenses of workers. This has led to calls for raising minimum wages and ensuring they are in line with inflation. Patch: Global economic recovery focus. The report emphasizes the importance of addressing wage stagnation to achieve a more inclusive global economic recovery post-pandemic. It encourages governments to focus on creating better paying jobs and stimulating growth in sectors that have been underfunded or undervalued, such as healthcare, education, and public services. Conclusion: The Global Wage Report 2022-23 presents a critical evaluation of global wage trends, emphasizing the challenges workers face, especially in light of inflation and sectoral disparities. It underscores the need for concerted efforts by governments, businesses, and global organizations to address wage inequality, gender disparities, and ensure better economic outcomes for workers globally. The report calls for policy interventions to ensure that wages grow at a rate that meets the rising cost of living and ensures fairness in the labor market.
वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मानदंडों एवं प्रभावों का विवेचन परिचय। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO द्वारा प्रकाशित किया गया, वैश्विक वेतन प्रवृत्तियों, महंगाई के प्रभाव और दुनिया भर में श्रमिकों द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्ट विभिन्न देशों और क्षेत्रों में वेतन में असमानताओं को उजागर करती है और आय असमानता तथा श्रम बाजार की स्थितियों पर प्रकाश डालती है। ये रिपोर्ट वैश्विक वेतन गतिशीलता को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण मानदंडों का विश्लेषण करती है। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मानदंड। 1. वेतन वृद्धि की प्रवृत्तियां। ये रिपोर्ट 2022-23 के दौरान वैश्विक वेतन वृद्धि की प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह महंगाई, कोविड-19 के बाद श्रम बाजार की वसूली और सरकारी नीतियों जैसे कारकों के प्रभाव का विश्लेषण करती है। कई देशों में वेतन वृद्धि महंगाई से धीमी रही, जिसके कारण वास्तविक वेतन में कमी आई है। ये रिपोर्ट क्षेत्रों, आय समूहों और लिंग के अनुसार वेतन वृद्धि के आंकड़ों को वर्गीकृत करती है। 2. महंगाई का प्रभाव। 2022-23 के इस प्रतिवेदन का एक प्रमुख मानदंड वेतन और महंगाई के बीच संबंध है। महामारी के बाद महंगाई में बढ़ोतरी ने वैश्विक श्रमिकों के वास्तविक वेतन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि महंगाई ने वेतन वृद्धि को पछाड़ दिया है, जिससे विशेष रूप से निम्न आय और विकासशील देशों में श्रमिकों की क्रय शक्ति घट गई है। 3. क्षेत्रीय वेतन असमानताएं। रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में वेतन वृद्धि में महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है। ये देखती है कि जबकि उच्च कौशल वाले क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी और वित्त में बेहतर वेतन वृद्धि हुई है, वहीं निम्न आय और अनौपचारिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि में ठहराव या गिरावट आई है। 4. क्षेत्रीय वेतन असमानता। रिपोर्ट वेतन असमानताओं का विश्लेषण करती है, जिसमें उच्च आय, मध्य आय और निम्न आय देशों के बीच अंतर को देखा जाता है। ये स्पष्ट करती है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच वेतन असमानता बढ़ी है और विकासशील देशों में श्रमिकों को वेतन स्थिरता या कमी का सामना करना पड़ा है। 5. लिंग वेतन अंतर। एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में रिपोर्ट लिंग वेतन अंतर का विश्लेषण करती है। ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि महिला श्रमिकों को पुरुषों के मुकाबले वैश्विक स्तर पर कम वेतन मिलता है और विकासशील देशों तथा निम्न वेतन वाले क्षेत्रों में महिला श्रमिकों को वेतन वृद्धि में अधिक चुनौतियां आती हैं। रिपोर्ट इस अंतर को कम करने के लिए मजबूत नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। 6. न्यूनतम वेतन नीति। रिपोर्ट ये भी विश्लेषण करती है कि दुनिया भर में न्यूनतम वेतन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है और किन देशों ने न्यूनतम वेतन कानूनों को लागू या बढ़ाया है। रिपोर्ट बताती है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि ने कुछ क्षेत्रों में आय असमानता को कम किया है, हालांकि कई निम्न आय देशों में इसके प्रभाव सीमित हैं। 7. कोविड-19 महामारी का प्रभाव। रिपोर्ट यह मूल्यांकन करती है कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक वेतन संरचनाओं को किस प्रकार बदल दिया है। महामारी ने श्रम बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव पैदा किया, जिसमें कई क्षेत्रों में नौकरियां कम हुई और दूरस्थ काम, रिमोट वर्क की ओर बदलाव आया। रिपोर्ट ये देखती है कि किस प्रकार विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं पुनः वसूली करने में सफल रही हैं या नहीं रही हैं और इसका श्रमिकों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के प्रभाव। 1. वेतन असमानता के प्रति जागरूकता में वृद्धि। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन ने विभिन्न क्षेत्रों, देशों और जनसांख्यिकी के बीच बढ़ती वेतन असमानता को उजागर किया है। इससे नीति निर्माताओं और संगठनों में वेतन असमानताओं को संबोधित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जैसे कि बेहतर श्रम नीतियां, न्यूनतम वेतन कानूनों में सुधार और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। 2. सरकारों के लिए नीति सिफारिशें। रिपोर्ट कुछ नीति सिफारिशें प्रस्तुत करती है, जैसे कि सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से वेतन वृद्धि को बढ़ावा देना, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करना ताकि निम्न आय श्रमिकों की सुरक्षा की जा सके। इन सिफारिशों का उद्देश्य महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के प्रभाव को कम करना है। 3. लिंग समानता पर ध्यान। रिपोर्ट में उभरकर सामने आया लिंग वेतन अंतर अब समानता के पक्ष में मजबूत नीतियों को लागू करने का दबाव बना रहा है। सरकारों और व्यवसायों पर अब ये दबाव बढ़ गया है कि वे समान वेतन नीति अपनाएं और कार्यस्थलों पर भेदभाव को खत्म करें। 4. वेतन सुधारों के लिए बढ़ता दबाव। कई देशों में रिपोर्ट ने न्यूनतम वेतन के पर्याप्त होने पर बहस शुरू कर दी है। अब ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि उन देशों में वेतन सुधारों की आवश्यकता है जहां न्यूनतम वेतन श्रमिकों के बुनियादी जीवन यापन खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इससे न्यूनतम वेतन बढ़ाने और महंगाई के साथ उसे मेल खाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। 5. वैश्विक आर्थिक पुनः वसूली पर ध्यान। रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक पुनः वसूली में वेतन स्थिरता को सुनिश्चित करने की महत्ता को रेखांकित करती है। ये सरकारों को प्रोत्साहित करती है कि वे बेहतर वेतन वाली नौकरियां उत्पन्न करने और उन क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाएं। निष्कर्ष। वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 ने वैश्विक वेतन प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत किया है, जिससे श्रमिकों को विशेष रूप से महंगाई और क्षेत्रीय असमानताओं के मद्देनजर कई संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट वैश्विक श्रमिकों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, व्यवसायों और वैश्विक संगठनों द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह नीति हस्तक्षेपों का आह्वान करती है ताकि वेतन महंगाई के बढ़ते प्रभाव के साथ बढ़े और श्रम बाजार में समानता सुनिश्चित हो। Q4-8 What are the basic provisions of the Foreign Trade Policy 2023 regarding export promotion initiatives in India? भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहल की दृष्टि से विदेशी व्यापार नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या है?
Foreign Trade Policy 2023 Key provisions regarding export promotion initiatives. The Foreign Trade Policy (FTP) of India 2023, introduced by the Ministry of Commerce and Industry, aims to boost India's exports and integrate the country into the global supply chain more effectively. The 2023 policy focuses on addressing challenges faced by exporters and creating a conducive environment for trade. Below are the key provisions related to export promotion initiatives under the FTP 2023 Ratio 1. Focus on sustainable and diversified exports. The FTP 2023 aims to increase exports by diversifying markets and products, ensuring that India's export growth is not solely reliant on traditional markets or products. This policy encourages exporters to tap into new geographies and sectors, including non-traditional markets in Asia, Africa, and Latin America. Though promotion of ease of doing business to enhance the efficiency of export procedures, the FTP 2023 simplifies export documentation, promotes digital transactions, and introduces automation in the export clearance process. It aims to streamline the process to reduce delays and make it easier for businesses to engage in international trade. The policy promotes a paperless trade environment through the integration of technology, including the expansion of the Electronic Data Interchange (EDI) system. Theme: Extension of the remission of duties and taxes on exported products. RoDTEP scheme. The policy extends the RoDTEP scheme to ensure that exporters receive reimbursement for taxes and duties imposed on export products. The scheme is designed to reduce the tax burden on exporters, making Indian exports more competitive in the international market. This initiative helps exporters by providing refunds for indirect taxes such as the Goods and Services Tax (GST), which were not refunded earlier under other schemes. Chart: Support for MSME exporters. The FTP 2023 recognizes the importance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the export sector and introduces targeted measures for their growth. These measures include easier access to finance for MSME exporters, a credit insurance scheme to reduce the risk involved in international transactions, special provisions for facilitating MSMEs to enter global markets, including market access programs and participation in international trade fairs. 5. Incentives for specific sectors to promote targeted export growth. The FTP 2023 provides sector-specific incentives for high-priority areas such as agricultural products, pharmaceuticals, and electronics, which have seen rapid growth in demand. Textiles, handicrafts, and jewelry are also given priority for export promotion through financial support and market development initiatives. Chair: Market Access Initiatives. The FTP encourages Indian exporters to focus on expanding their reach in emerging markets through government initiatives such as Market Access Initiatives and Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES). The policy also supports the creation of dedicated trade offices in key foreign markets to act as a bridge for Indian exporters and foreign buyers. 7. Digitalization and use of technology. The 2023 policy emphasizes the role of digital tools and technology in facilitating export activities. There is a significant focus on promoting digital marketing and e-commerce platforms for smaller exporters, enabling them to access global markets through digital channels. The policy advocates for increased use of artificial intelligence, blockchain, and other advanced technologies to improve traceability, quality standards, and transparency in the export process. Art: Special Economic Zones (SEZs) and Export-Oriented Units (EOUs). The FTP 2023 promotes the development and growth of Special Economic Zones (SEZs) and Export-Oriented Units (EOUs), which offer significant tax exemptions, infrastructure support, and easier access to finance to businesses engaged in export activities. The policy encourages collaboration between SEZs and other trade infrastructure projects to facilitate the ease of export-oriented production. Export credit and insurance support. The policy focuses on facilitating access to affordable export credit to enhance the financial viability of export ventures. It also encourages the use of export credit insurance to mitigate risks involved in cross-border trade. The Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) plays a vital role in providing risk cover for exporters, particularly in the context of volatile markets. Thus, trade facilitation and capacity building. The policy emphasizes capacity building through training and skill development programs for exporters. It includes the establishment of Export Facilitation Centers (EFCS) that provide information, guidance, and assistance to new exporters. The policy encourages the use of Export Promotion Councils (EPCs) and industry associations to help exporters navigate complex international markets and comply with international standards. Conclusion: The Foreign Trade Policy 2023 provides a comprehensive framework for boosting India's exports by promoting diversification, enhancing ease of doing business, and providing targeted support to exporters, particularly MSMEs. It focuses on ensuring sustainable export growth by integrating technology, offering financial support, and creating a robust export ecosystem. These provisions are designed to make India a prominent player in global trade by increasing its market share in international exports while making the export process more transparent, accessible, and efficient. भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहल की दृष्टि से विदेशी व्यापार नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान। भारतीय विदेशी व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना और देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावी रूप से एकीकृत करना है। यह नीति निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है।
नीचे नीति के निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। 1. स्थिर और विविध निर्यातों पर ध्यान। विदेशी व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य भारत के निर्यातों को विविध बनाना है, ताकि भारत का निर्यात केवल पारंपरिक बाजारों या उत्पादों पर निर्भर न रहे। यह नीति निर्यातकों को नए भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे गैर पारंपरिक बाजारों को शामिल किया गया है। 2. व्यवसाय करने में आसानी का प्रचार। निर्यात प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए नीति निर्यात दस्तावेजों को सरल बनाती है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है और निर्यात मंजूरी प्रक्रिया में स्वचालन पेश करती है। इसका उद्देश्य देरी को कम करना और व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेना आसान बनाना है। नीति पेपरलेस व्यापार वातावरण को बढ़ावा देती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एडी प्रणाली का विस्तार शामिल है। 3. रोटेप योजना का विस्तार। नीति रोटेप रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना का विस्तार करती है, ताकि निर्यातकों को निर्यात उत्पादों पर लगे करों और शुल्कों का प्रतिपूर्ति मिल सके। ये योजना निर्यातकों के लिए कर बोझ को कम करने का लक्ष्य रखती है, जिससे भारतीय निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सके। 4. एमएसएमई निर्यातकों का समर्थन। नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईएस के लिए लक्षित उपायों का परिचय देती है, जैसे कि वित्त तक आसान पहुंच, क्रेडिट बीमा योजना और वैश्विक बाजारों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान। 5. विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन। नीति उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान करती है। 6. बाजार पहुंच पहल। नीति निर्यातकों को उभरते हुए बाजारों में अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए बाजार पहुंच पहल में और व्यापार अवसंरचना योजनाओं टाइप्स जैसी सरकारी पहलों का समर्थन करती है। 7. डिजिटलकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग। नीति निर्यात गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने पर जोर देती है। 8. विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सेस और निर्यात उन्मुख इकाइयां EOUS। नीति SEZS और EOUS के विकास को बढ़ावा देती है, जो निर्यात गतिविधियों में शामिल व्यवसायों को कर छूट, बुनियादी ढांचा समर्थन और वित्त तक आसान पहुंच प्रदान करती है। 9. निर्यात क्रेडिट और बीमा समर्थन। नीति निर्यातकों के लिए सस्ती निर्यात क्रेडिट और निर्यात क्रेडिट बीमा तक पहुंच की सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। 10. व्यापार सुविधाजनक और क्षमता निर्माण। नीति निर्यात सुविधा केंद्रों EFCS और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों EPCSQ 5 provide a brief overview of the Manipur crisis. In your view, what could be the potential repercussions of this ethno-religious conflict on the landscape of national politics? Comment. मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में इस जातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? टिप्पणी कीजिए। Answer. Overview of the Manipur crisis. The Manipur crisis, which began in early 2023, represents a severe ethno-religious conflict that has disrupted the social fabric of the state and raised national and international concerns. The conflict is primarily between the Meitei community, which is predominantly Hindu and resides in the Imphal Valley, and the Kuki-Zomi tribes, who are primarily Christian and inhabit the surrounding hill areas. The crisis escalated following the Meitei community's demand for scheduled tribe (ST) status, leading to violent clashes, displacement of thousands, and significant loss of life and property. Key aspects of the crisis. 1. Historical and socio-cultural background. Manipur is home to a complex demographic with over 30 ethnic groups, often competing for limited resources and political power. The demand for ST status by the Meiteis has been seen by the tribal communities as a threat to their economic and cultural autonomy. Though trigger events, the violence was sparked in May 2023 after a court ruling called for the inclusion of Meiteis in the ST category. Protests against this decision quickly turned violent, leading to ethnic segregation and widespread displacement. 3. Geopolitical implications. Manipur's location in the northeast, a region with a history of insurgency and fragile peace, complicates the situation further. The proximity to international borders with Myanmar has also raised concerns about cross-border influences and arms smuggling. 4. Humanitarian crisis. Over 50,000 people have been displaced, with relief camps set up across the state. Reports of targeted violence, including attacks on women and children, have drawn widespread condemnation. Potential repercussions on national politics. The Manipur crisis is not just a state issue but has broader implications for national politics, governance, and social cohesion. Below are the possible repercussions. 1. Undermining federalism. The crisis highlights challenges in the federal structure, where states with distinct ethnic compositions often feel underrepresented or neglected by the central government. Failure to address such conflicts would weaken trust in the central government's ability to manage state-specific issues. Though polarization of communities, the ethno-religious nature of the conflict would fuel similar demands and unrest in other multi-ethnic states such as Nagaland or Mizoram, where tribal identities are politically significant. It may also lead to increased polarization along religious lines at the national level. 3. Challenges for national security. Continued instability in Manipur could spill over into neighboring states, creating a security challenge for the region. The Northeast's strategic importance as a gateway to Southeast Asia makes peace in the region vital for national security. 4. Political ramifications. The handling of the crisis has drawn criticism toward the central and state governments, particularly from opposition parties. It could become a key issue in electoral campaigns, with political parties using it to criticize governance and human rights failures. 5. Impact on India's international image. Reports of human rights violations and the inability to restore peace have attracted international scrutiny.
India's image as a stable democracy could be tarnished, affecting its aspirations for global leadership roles. Share. Legislative and policy responses. The crisis could lead to renewed debates on policies related to tribal rights, affirmative action, and regional autonomy. A demand for greater representation of Northeast issues in national policy making may arise. Recommendations and conclusion to mitigate the impact of such crises. The following steps are essential. 1. Inclusive dialogue. Establish platforms for dialogue between conflicting groups to address grievances and foster mutual understanding. 2. Strengthening governance. Improve the administrative capacity of the state to manage ethnic tensions and ensure equitable distribution of resources. 3. Development initiatives. Focus on economic development and infrastructure in conflict-prone areas to reduce competition for resources. 4. Legislative clarity. Review policies related to the ST status to balance the rights of different communities. In conclusion, the Manipur crisis is a stark reminder of India's diversity and the challenges it poses. If not addressed promptly and effectively, it could have far-reaching consequences on national politics, social harmony, and India's international standing. Ensuring peace and stability in the region is not just a state issue but a national priority.